Hello everybody. So hope you are doing good. In this pediatric series, in cases of Marsmus with other conditions, we were discussing some common medicines. So moving on, today I will discuss first about petroleum. So petroleum is a medicine जहाँ पर Marsmus के साथ अगर आपको डायरिया मिलता है, and the peculiarity of the diarrhea that N.M. Chaudhary mentioned is that diarrhea is very harassing kind of diarrhea, especially in the daytime mostly. And in Allen's keynote, if you see in the petroleum, the last line, the diarrhea only in the daytime, and that is in italics itself. So this is the peculiarity of the diarrhea. With harassing kind of diarrhea, if there is a garlicky odor in the breath and in stool, plus if there is skin manifestations like eczema है बच्चे के अंदर, अगर उसको cracks मिल रहा है, raggeds present है, then we can think about petroleum. And there is aversion to open air in petroleum also. So moving on to the next medicine is phosphorus. Phosphorus एक ऐसी medicine है जहाँ पर if he Allen's keynote में जो पहला line है कि adapted वाला जो part लिखा हुआ है that beautiful eyelashes, the child is very much lean, thin and tall for his age. This is the picture of the phosphorus child, very much craving for the cold thing, ice, water. इसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, स्वीट सॉल्ट फिश, ये डिज़ायर हमको मिलेगा फॉस्फोरस में. बहुत आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअली कीन बच्चा. दिस इज द थिंग दैट इज इंडिकेटिंग फॉर फॉस्फोरस. प्लस दैट इमेसिएशन के साथ पॉट बेलिडनेस इज ऑल्सो देयर इन फॉस्फोरस का बच्चा. सो दिस इज मोर और लेस फॉर फॉस्फोरस. अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर. तो वी कैन थिंक अबाउट फॉस्फोरस. Another medicine is silesia. Silesia का बच्चा क्या है कि when you are communicating with that बच्चा, the बच्चे if you will ask कि क्या खाना पसंद है, the बच्चा will not directly speak on your face. मतलब अपनी माँ जो है उसके खाना बोलेगा, मिठाई खाना पसंद है, ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है. That timidity is present there in silesia का बच्चा. That obstinacy plus timidity. बहुत ज़्यादा इरिटेबल बच्चा होता है साइलिशा का. ऑब्स्टिनेसी उसके स्टूल में भी दिखती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड बच्चा होगा, और साइलिशा में दैट ऑफेंसिवनेस, ईटिंग वेल एंड लूजिंग फ्लेश, बहुत अच्छा खा रहा है लेकिन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है, एसिमिलेट नहीं कर पा रहा है बच्चा. दिस इज द थिंग फॉर साइलिशिया. अनदर मेडिसिन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. देयर आर अदर मेडिसिन इन द क्यू बट आई विल डिस्कस ओनली दिस इज द लास्ट. सल्फर. सल्फर का बच्चा, दैट फिल्थ and that dirt itself speaks about sulfur. Very much nauseous smelling, offensive smell from the sulfur ka bacha. And that stoop shouldered, that dirtiness and that craving for sweets, all these are the symptoms for sulfur. That pot belliedness, emaciation is also there for sulfur. That burning hand, burning in everywhere, constipation, diarrhea, these are the things. Plus one thing I want to mention, that in phosphorus, if you see Allen's keynote in the relationship section, HC Allen has quoted Master Hahnemann, that Master Hahnemann says कि phosphorus acts well in cases, chiefly in the cases जहाँ पर आपको chronic diarrhea और loose stool का history मिल रहा है, phosphorus acts well. That's all in this series. Thank you everyone.